अगर आप डीएफएस की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3-4 महीने से हम डीएफएस की कमेटी के बारे में जिक्र कर रहे थे, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डीएफएस को कहा गया था कि एक कमेटी बिठा करके उसके द्वारा एसबीआई के 40 से 50% पेंशन के बारे में डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें। इस विषय में कल दिल्ली हाई कोर्ट में डीएफएस द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट के बारे में कई लोगों ने कई भ्रांतियां फैलाई भी हैं और कईयों को अभी भी ये विश्वास नहीं आ रहा कि क्या कमेटी ने उस एनोमली को राइट फ्रॉम बिगिनिंग गलत माना है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए स्टेट बैंक को कहा गया। दोस्तों, जो कमेटी का लेटर कोर्ट में सबमिट किया गया, उसके साथ साथ कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की गई होगी। उस रिपोर्ट की कॉपी अब सोशल मीडिया में आ गई है और उस रिपोर्ट पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये 19 पेज की रिपोर्ट है, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आइए डीएफएस की रिपोर्ट पर नज़र डालें। ये ऊपर हेडिंग में हाथ से लिखा गया है कि हैंड ओवर इन कोर्ट प्लीज टेक ऑन रिकॉर्ड। ये लेटर नंबर है 16/2/3/2011-IRPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विस 3rd फ्लोर जीवनदीप बिल्डिंग संसद मार्ग न्यू दिल्ली डेटेड 7 नवंबर 2023। ये एड्रेस किया गया है टू श्री चेतन शर्मा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट। सब्जेक्ट रिट पिटिशन नंबर 1875/2013 टाइटल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एंड ORS versus the Union of India and others. Constitution of a panel of expert committee on pension matter of SBI. Heading ही है पेंशन मैटर ऑफ एसबीआई। सर, with reference to the subject mentioned above enclosed, please find a copy of the report of committee constituted in pursuance to the Honorable High Court of Delhi order dated 13/4/2023 in writ petition number 1875/20. The recommendation of the committee has been accepted by the competent authority, and to give effect to the same, SBI is required to make amendment in relevant regulation as per section 50 of the State Bank of India Act 1955. Accordingly, the bank is being advised to send a proposal to this department in this regard. ESG is requested to appear the above to the Honorable High Court of Delhi. Yours faithfully, विजय शंकर तिवारी, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ। ये इन्होंने अपनी इसी में अटैचमेंट किया है एज अबव। ये कमेटी ऑन पेंशन मैटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस अक्टूबर 2023। कमेटी ऑन पेंशन मैटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस। ये डॉक्टर MP तंगाराला, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरमैन। इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी थी, जिसमें कि ये मेंबर थे समीर शुक्ला, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, और RC सिटी डिप्टी सेक्रेटरी पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर मेंबर। ये BK मैथन, डिप्टी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेंबर। सुनील मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मेंबर। कुलभूषण नैयर, डिप्टी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंबर सेक्रेटरी। तो ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी और इन्होंने ये पूरा डिस्कशन करने के बाद ये रिपोर्ट कंपाइल की। इसमें बैकग्राउंड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट बैंक के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली EWP
number 1875/2023 by its order dated the 13th April 2023 directed that the petitioner, Federation of State Bank of India Pensioners Association, should submit representation to the Ministry of Finance, highlighting the grievances, and the Ministry of Finance will get grievances of petitioner examined by a panel of expert and expert committee. The Honorable Court further mentioned in the said order that in case it is decided not to accede to the request of the petitioner, the reason thereof be communicated to the court before next date of hearing. तो ये ऑर्डर था, इसमें ये था कि यदि रिकमेंडेशंस नेगेटिव होती हैं तो आप उसके रीजन लिख करके कोर्ट में सबमिट करिए. अकॉर्डिंगली ऑन रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन 27 April 2023 from the Federation of State Bank of India Pensioner Association petitioners, a committee under the chairmanship of Sri MP Tangirala, Additional Secretary, Department of Financial Services, was constituted by order F number 16/2/3/2011-IR dated 14 June 2023 to deliberate on the issue mentioned in the representation. ये डिटेल मेंबर्स की मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थी कमेटी की defined as to examine or review the extent concept of payment of pension at the rate of 50% and 40%. दूसरा था to examine the suggestions of retirees for payment of the pension at the rate of 1/60th for every completed year of pensionable service as provided in Rule 23 Sub-Rule 1 of State Bank of India SBI Pension Regulation. To examine the issue of neutralization of dearness allowance DA on the pension for those who retired before 2000. To examine the issue of updation of pension with every wage revision settlement. To suggest the course of action while balancing the cost of retirement benefit and financial implication to on them. दोस्तों ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थी. उसके बाद ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा उन्होंने बताया उसमें कि स्टेट बैंक की जो पेंशन स्कीम है वो काफ़ी पुरानी है. 1920 से ही ये चली आ रही है और जब 1955 में स्टेट बैंक बना था तब भी पेंशन स्कीम थी और साथ में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी था. जो पेंशन स्कीम SBI की कंट्रीब्यूटरी स्कीम भी थी. Every employee used to contribute 5% of the salary subject to the maximum of ₹90 per month. There had been a maximum ceiling attached to the pension. However, in 1968, the employee's contribution of 5% was discontinued, but the ceiling of pension continued. ये 68 में सीलिंग कंटिन्यू रही लेकिन 5% कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दिया था. 89 से लेकर के 92 तक ये डिफरेंट लेवल पे ये चलती रही सीलिंग. और आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970 employees started getting gratuity also. SBI Pension Fund Regulation 2014 have been framed under Section 50 of SBI Act 1955. The said section provides power to the central board of the bank to make regulation in for superannuation matters. After consultation with the Reserve Bank of India and with previous sanction of central government, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली थी और स्टेट बैंक का जो पेंशन रूल सुपरएनुएशन रूल्स के लिए बोर्ड को ऑथराइज कर दिया गया था. इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि पेंशन स्कीम इन SBI is altogether different from pension scheme available in central government and nationalized bank, as the pension scheme in both central government employees and nationalized bank are in lieu of CPF, contrary to the pension scheme in SBI, which is not in lieu of CPF. In the year 1999, the concept of the 50
oblique 40% was introduced, which provided for pension at 50% for all officers drawing pay up to rupees 8,500 and 40% for all officers drawing pay exceeding 8,500 subject to minimum of rupees 4250. Since then, the concept of the calculation of pension at dual rate continued. ये 99 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से अब तक कंटिन्यू चल रहा था। काफ़ी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिए गए यूनियन ने, लेकिन जब बैंक ने नहीं सुना तो पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा भी रिट पिटीशन फाइल कर दी गई, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पिटीशन 184 पब्लिक 2011 था। Petition of State Bank of India Passenger Association in Honorable Supreme Court of India, which was later transferred to the Honorable High Court of Delhi and registered as writ petition number 1875 of 1930. It is since then the case is continuing. तो ये 2013 से केस चल रहा था और प्रेजेंट पेंशन सीलिंग फिक्स्ड 1112017 is at the rate of 50%, where the average monthly subsistence salary drawn during the last 12-month pensionable service is up to 80,450 and is at the rate of 40% drawing with the minimum of 40,222. ये प्रोसीडिंग ऑफ कमेटी का है कि इसमें मीटिंग कमेटी ने ली है 7/7/2023 को, 26/7/2023 को, 9/8/2023 को, 14/9/2023 को और फाइनली 5/10/2023 को। ऑल मीटिंग्स वर हेल्ड इन DFS मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और इसमें ये मीटिंग में डिस्कस किया गया। इसमें DMD HR भी रिप्रेजेंट किए थे SBI के बिहार में। उन्होंने पूरी बैकग्राउंड को दिखाया और उसमें बताया कि 83% को 99 से 50% मिल रही है, 17% को 40% मिल रही है। तो इसी को रिप्रेजेंट SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी किया था इन्हीं पॉइंट्स पे, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्टेट बैंक का जो पेंशन का सिस्टम है वो नेशनलाइज बैंक से बिल्कुल अलग है और उसको उसके साथ नहीं मिलाया जा सकता। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम IBA इन्फॉर्म दैट नो सच डिमांड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम नेशनलाइज बैंक। इसमें जो नेशनलाइज बैंक का क्लब करने की बात थी, लेकिन नेशनलाइज बैंक में ऑलरेडी 50% है तो उसमें कोई डिमांड की कोई बात नहीं आती। लेटर ऑफ SBI डेटेड 10/6/1997, where the bank itself had requested for dual rate, lower rate for senior level officers of the pension was also discussed. During the deliberation, representative of the IBA mentioned that since the issue mentioned point number 15C and 15D have industry-wide ramification, the same may be dealt with separately. Accordingly, the committee decided that these issues shall be dealt separately and not by the committee, as the scope of these issues is not limited to SBI. पेंशन अपडेशन वाला जो इशू था उसको सारा इंडस्ट्री लेवल का था, इसलिए उन्होंने इस इशू को छोड़ दिया क्योंकि ये SBI से लिमिटेड नहीं था। Observation of the committee: SBI, both pension and CPF were involved even prior to the SBI coming into existence pursuant to the SBI Act 1955. Pension scheme of SBI is altogether different from the nationalized bank and the government, as the later organization pension is in lieu of CPF. Their pension scheme of SBI was contributory scheme, and that is every employee used to contribute 5% and their salary subject to maximum of ₹90 per month. However, in year 1968, the contribution was stopped and the monetary ceiling limited continued on the pension. Prior to 1987, ceiling was on pension were rupees 750 and 1,000, due to which two classes of
employees were there. However, Supreme Court, in its decision dated 23 to 1989, while removing these two ceilings limits, fixed monetary ceiling on rupees on pension at rupees 2,400. This monetary ceiling limit fixed by the Supreme Court happened to be 50% of the highest pay per month in the bank at that time. Thus, the anomaly of two classes of the employees in the same organization are corrected by this decision of the Supreme Court at that time. Further, this monetary ceiling of rupees 2,400 was revised to 4,250 with effect from 1/11/92. After the pay revision, this again was 50% of the highest pay per month in the bank at that time. Since this ceiling limit was not linked to the wage revision in the bank, over a period of time, it again led to the anomalous position where the officers at the senior and junior level were getting same amount of the pension. For example, the effective pension of the deputy managing director was approximately at rate of 28%, whereas many officers at the junior level were getting pension at the rate of 50%. Based on the request received from the bank, the issue was examined in DFS in 1999. Concept of the 40% for calculation pension in place. Monetary ceiling was introduced in SBI. Since then, the pension calculation payment in SBI is at dual rate. Removal of a monetary ceiling limit and introduction of a concept of a pension calculation at dual rate 50-40% had been relieved to the or relieved to some extent to the officers at the senior level. However, this concept also created two classes of the employee in the same organization. Such situation does not exist in any other organization. It was observed by the committee that the approximately only 17% of the total employees of the bank at the senior level are getting lower pension at the rate of the 40%, and remaining approximately 83% employees are already getting pension at the rate of 50% of the pay. Other retired benefit being same for all the employees. It is only this small set of the employees at the senior level where lower rate of pension has been implemented. Committee further observed that in all nationalized bank, RBI and central government retired are paid pension at the uniform rate of 50% of their pay. IBA has also mentioned that there is an anomaly where the pensioners retiring from the higher scale are getting pension almost equal to that of the official retiring at the basic pay below the maximum of the junior management grade scale 1, and recommended that the anomaly may be eliminated by permitting SBI to fix the basic pension at 50% of the basic pay of all its retirees as against the two different classes maintained at present. IBA has further informed that the issue of the DNS allowance oblique DNS relief neutralization and the pension updation relates to the banking industry as a whole and does not relate only SBI employees and pensioners and may be deliberated separately. Accordingly, in the meeting of the committee held on 7th July 2023, it was unanimously decided that these issues shall be dealt separately and not by the committee as the scope of these issues is not limited to the SBI only. As regard the financial impact of the proposal of the pension at the uniform rate of 50% for all retirees in SBI based on data and information provided by the SBI, it has been observed that the committee that total corpus of SBI employees pension fund is rupees 1,56,966.26 crore as on 31st March
2023, and annual earning from the corpus is approximately rupees 8,714.10 crore, out of which the present total pension payout of SBI is approximately rupees 10,696.19 crores. The additional pension outgo has been estimated by the SBI as approximately rupees 283 per annum. 283 crore per annum. The one-time cost of the provisioning of implementation of the uniform pension at the rate of the 50% has been estimated to be approximately rupees 5,400 crores by the bank. Thus, the SBI has ability to pay or bear the cost of additional payout from out of its pension fund in case of the uniform pension at the rate of 50% for all pensioners in is to be paid. The anomaly of the dual rate of the pension can be rectified by bringing uniform rate of pension calculation for all employees within the same organization. Conclusion and recommendations. In view of the extensive deliberation held during the meeting of a committee and based on the fact presented, the committee is of opinion that the anomaly of calculation of pension at the dual rate within the organization SBI need to be rectified. Accordingly, the committee is unanimously view that the pension in SBI may be calculated at uniform rate of 50% for all pensioners, and this opinion of the committee may be placed before the competent authority for taking final decision on the same. ये साइन की गई है 25 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है कमेटी की। दोस्तों, इस तरह ये कमेटी के रिपोर्ट है जिसमें कि पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया है कि एसबीआई इस कैपेसिटी में है कि वो 50% पेंशन सभी ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म रेट पे दे सकता है और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस एसबीआई को दे दी गई हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कल डिसीजन दिया। कोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी जजमेंट को मैं आपके समक्ष पेश करूंगा जब भी जजमेंट अवेलेबल हो जाएगी कोर्ट की साइट पे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने साथियों में शेयर भी करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में या बैंकिंग के बारे में जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।